1. Lackadaisical, adjective. सस्ती, नाटुआ, फीका. Lacking enthusiasm and determination, carelessly lazy. 2. Dissemination, noun. बखेरा. बीज डालना. बखेरना. The action or fact of spreading something, especially information, widely. 3. Commendable, adjective. काबिल तहसीन. काबिल तारीफ. Deserving praise. 4. Reluctant, adjective. नाजामंद. हिचकिचाहट. अड़ियल. Unwilling and hesitant, disinclined. 5. Abridged, adjective. मुख्तसर. महदूद करना. Of a piece of writing, having been shortened. 6. Merger, noun. इंज़माम. इदगाम. वहदत. दो या ज़्यादा तंजीमों या कारोबारों को एक में शामिल करने का अमल. The act of joining two or more organizations or businesses into one. 7. Stymie, verb. मंसूबे पर अमल करने से रोकना. किसी को कुछ ऐसा करने से रोकने के लिए जो उसने मंसूबा बनाया है या करना चाहते हैं. कुछ होने से रोकने के लिए. To be an obstacle to, prevent the advancement or success of, thwart or stump. 8. Transform, verb. बदलना. काया पलटना. तब्दील करना. To change markedly the appearance or form of. To change the nature, function, or condition of, convert. 9. Inherit, verb. वारिस होना. जानशीन होना. पीछे आना. To receive money, property, etc. from somebody when they die. 10. Insurgency, noun. ताकत के जरिए मुल्क पर कब्जा करने की कोशिश. बगावत. सरकशी. बाढ़. सैलाब. An attempt to take control of a country by force. The call for setting up an internal security structure on the lines of the US Homeland Security Department echoed again last week when the Board of Governors of the National Counter Terrorism Authority, Nacta, met in the federal capital. A lucrative and massive internal security infrastructure always inspires Pakistani security institutions, despite the existence of multiple constraints. The bureaucratic mindset has developed a habit of suggesting new initiatives, inspired by those in the West, without considering the local context, need and the inherent financial and institutional limitations. There is hardly any interest in and consideration of reforming existing mechanisms for improving their implementation and efficiency. The logic behind proposing ever new parallel initiatives is that it gives bureaucracy the room to shift the blame for their lack of competence onto the existing system. Executives and policymakers are convinced, because plenty of donors remain available to provide initial financial assistance for such initiatives. The international donor community has its own limitations and believes in supporting local initiatives suggested by the same bureaucracy directly or by consultants serving the donor community during their deputations. The government does not appear to realize that eventually these new initiatives will become white elephants for the state. Before it had put forward the idea of a homeland security structure in Pakistan, Nacta had sent a proposal to Prime Minister Shehbaz Sharif for setting up a National Counter Terrorism Department. The proposed department would be operated under Nacta at the federal level and would have the authority to conduct counterterrorism operations across the country. Lackadaisical handling has stymied the functioning of Nacta. Even now, the authority is still in the process of determining its exact role, coordinating among law enforcement agencies or providing policy insights to the government. According to the Nacta Act, data collection and information processing and dissemination to the relevant authorities are its primary tasks. The law elaborates on the vital function of coordination among security agencies. Nacta had also established a joint intelligence directorate consisting of hundreds of officers from the intelligence agencies and police.
The department's fate and progress are unknown, except that it is consuming most of Nacta budget. Intelligence agencies are reluctant to share information with a civilian body like Nacta. Nacta should not have to demand an operational role to counter terrorism-related threats when provincial counterterrorism departments of police already exist and are performing well, both in launching anti-militant operations and gathering information. The CTDs of the Sindh and Punjab police, especially, have done a commendable job. If the federal and provincial governments introduce a few accountability and transparency reforms and improve their capacity, these departments can perform even better. So far, these CTDs have been operating along traditional police lines, meaning they also inherit all the institutional ills of the law-enforcing body. Nacta can develop better coordination among the CTDs and keep feeding information, extracted from the Joint Intelligence Directorate, to them. It may need legislative changes. It is interesting to note that Nacta itself was conceived in the context of the Homeland Security Department. However, establishing such an independent body will remain a dream from the Pakistani perspective. First, the Homeland Security Department has a specific background and evolved through a merger of different departments dealing with internal threats. Second, this is a huge body, with 24 departments and an annual budget of $173 billion. Apart from the monetary and organizational aspects of such a huge institution, the nature of the threats the U.S. is facing is different. After some thought, Nacta was later patterned on the UK's National Security Secretariat, which coordinates security and intelligence issues across the government and produces assessments on national security issues. In this context, Nacta should have been developed to provide strategic guidance and serve as a central node for all intelligence bodies. But such a body cannot work in Pakistan because intelligence agencies remain reluctant to share information with a civilian body like Nacta. The provincial governments and the CTDs are evolving structures like Nacta. Last month, the CTD Sindh established a new cell called the Anti-Extremism Enforcement Cell. The KP government has already taken this step. Indeed, Pakistan needs a federal body like Nacta, which should ensure the implementation of the National Internal Security Policy and the National Action Plan, NAP. However, the government and even Nacta's bureaucracy and the Interior Ministry do not take internal security issues very seriously unless terrorism and extremism-related issues surface and people demand action. In this situation, Nacta suddenly becomes vital, but when the critical stage is over, the government forgets Nacta. The last meeting of the authority's Board of Governors was held after a gap of 2 years, despite a legal obligation that the board should meet at least once in each quarter of the year. Importantly, the last meeting also noted that the restructuring of Nacta is required, and several proposals have been discussed for this purpose. However, transforming the body or creating a parallel body like the Homeland Security Department is not feasible in the Pakistani context because of the reasons discussed earlier. Pakistan needs to launch a critical inquiry into our security structures and the mindset they have created. The law enforcement infrastructure that Pakistan inherited and that has evolved over the years has been failing, mainly because of the growing complexities and the challenges of internal security and the inability of the state to reform the system. Nacta can become effective if it focuses on its core coordination mandate and provides policy insights on internal threats. If it diverts from its mandate, other agencies will continue encroaching on its space. Last year, the 20-point NAP was revised to become an abridged 14-point version of the original document. For its implementation, a new secretariat was established. The body has to prove its relevance, while providing a concrete plan to counter the emerging terrorism threats from the TTP and the Baloch insurgency. The writer is a security analyst. Published in Dawn, December 11, 2022. For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. Like, subscribe, share and comments.
अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की तर्ज पर दाखिली सलामती का ढांचा कायम करने का मुतालबा गुज़िश्ता हफ्ते एक बार फिर इस वक्त गूंजा जब वफाकी दारुल हुकूमत में नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी नेक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास हुआ। एक मुनाफा बख्श और बड़े पैमाने पर दाखिली सलामती का बुनियादी ढांचा हमेशा मुतअद्दिद रुकावटों की मौजूदगी के बावजूद पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों को मुतासिर करता है। ब्यूरोक्रेटिक ज़हनियत ने मकामी सियाक व सबाक, ज़रूरत और मौरूसी माली और इदारा जाती हुदूद पर गौर किए बगैर मगरिब के लोगों से मुतासिर होकर नए इक़दामात तजवीज़ करने की आदत डाल ली है। उनके नफाज और कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए मौजूदा मेकानिज़्म में इस्लाहात में शायद ही कोई दिलचस्पी और गौर किया जाए। नए मुतवाज़ी इक़दामात की तजवीज़ के पीछे मंतक ये है कि इससे ब्यूरोक्रेसी को अपनी अहलियत की कमी का इल्ज़ाम मौजूदा निज़ाम पर डालने की गुंजाइश मिल जाती है। एग्जेक्टिव्स और पॉलिसी साजों को यकीन है क्योंकि इस तरह के इक़दामात के लिए इब्तिदाई माली इमदाद फराहम करने के लिए बहुत से अतिया दहिंदगान दस्तयाब हैं। बैन अल-अक़वामी डोनर कम्युनिटी की अपनी हुदूद हैं और वो इसी ब्यूरोक्रेसी के ज़रिया बराह रास्त अपने डिपुटेशन के दौरान डोनर कम्युनिटी की खिदमत करने वाले कंसल्टेंट्स के ज़रिया तजवीज़ करदा मकामी इक़दामात की हिमायत करने पर यकीन रखते हैं। ऐसा लगता है कि हुकूमत को ये एहसास नहीं है कि आखिरकार ये नए इक़दामात रियासत के लिए सफ़ेद हाथी बन जाएंगे। पाकिस्तान में होमलैंड सिक्योरिटी ढांचे का ख्याल पेश करने से कबल नेक्टा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नेशनल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के क़याम की तजवीज़ भेजी थी। मुजव्वज़ा महकमा वफाकी सतह पर नेक्टा के तहत चलाया जाएगा और इसे मुल्क भर में इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने का इख्तियार हासिल होगा। नाकारा हैंडलिंग ने नेक्टा के कामकाज को रोक दिया है। यहाँ तक कि अथॉरिटी अब भी अपने अन मुताबिक किरदार का तयन करने के अमल में है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान ताउन हुकूमत को पॉलिसी बसीरत फराहम करना। नेक्टा एक्ट के मुताबिक डेटा कलेक्शन और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और मुतालिका हुक्काम तक पहुँचाना इसका बुनियादी काम है। इस कानून में सिक्योरिटी एजेंसियों के दरमियान हम आहंगी के अहम काम की वजाहत की गई है। नेक्टा ने एक ज्वाइंट इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट भी कायम किया था जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसियों और पुलिस के सैकड़ों अफसरान शामिल थे। महकमे की किस्मत और पेशरफ्त नामालूम है सिवाय इसके कि ये नेक्टा के बजट का ज़्यादातर हिस्सा इस्तेमाल कर रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसियां नेक्टा जैसे सिविलियन इदारे के साथ मालूमात शेयर करने से गुरेज़ा हैं। नेक्टा को दहशतगर्दी से मुताल्लिक खतरात का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशनल किरदार का मुतालबा नहीं करना चाहिए जब पुलिस के सूबाई इंसदाद दहशतगर्दी के महकमे पहले से ही मौजूद हैं और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहे हैं दोनों अस्करियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू करने और मालूमात जमा करने में। खास तौर पर सिंध और पंजाब पुलिस की CTDs ने काबिल सिताइश काम किया है। अगर वफाकी और सूबाई हुकूमतें एहतसाब और शफाफियत में चंद इस्लाहात मुतारफ कराएं और अपनी इस्तेदाद कार में बेहतरी लाएं तो ये महकमे और भी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा कर सकते हैं। अब तक ये CTD रिवायती पुलिस लाइन्स के साथ काम कर रहे हैं जिसका मतलब यह है कि वो कानून नाफिज करने वाले इदारे की तमाम इदारा जाती खराबियों को भी विरासत में देते हैं। नेक्टा CTDs के दरमियान बेहतर हम आहंगी पैदा कर सकता है और ज्वाइंट इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट से हासिल करदा मालूमात उन्हें खिलाता रहता है। इसके लिए कानून साजी में तब्दीली की ज़रूरत पड़ सकती है। दिलचस्प बात यह है कि नेक्टा का तसव्वुर खुद होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के तनाजुर में किया गया था। ताहम इस तरह के एक आज़ाद इदारे का क़याम पाकिस्तानी नुक्ता नज़र से एक ख्वाब ही रहेगा। सबसे पहले होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का एक मखसूस पस मंज़र है और अंदरूनी ख़तरात से निमटने वाले मुख्तलिफ महकमों के इंज़माम के ज़रिए तैयार किया गया है। दूसरा, ये एक बहुत बड़ा इदारा है जिसमें 24 महकमे और $173 बिलियन का सालाना बजट है। इतने बड़े इदारे के माली और तंजीमी पहलुओं के अलावा अमरीका को दरपेश ख़तरात की नौयत भी मुख्तलिफ है। कुछ सोच विचार के बाद नेक्टा को बाद में बरतानिया के नेशनल सिक्योरिटी सेक्रेटरीट में शामिल किया गया जो हुकूमत भर में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के उमूर को मरबूत करता है और कौमी सलामती के उमूर पर जायज़े तैयार करता है। इस तनाजुर में नेक्टा को स्ट्रेटेजिक रहनुमाई फराहम करने और तमाम इंटेलिजेंस इदारों के लिए एक मरकजी नोड के तौर पर काम करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए था।
लेकिन ऐसा इदारा पाकिस्तान में काम नहीं कर सकता क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसियां नेक्टा जैसे सिविलियन इदारे के साथ मालूमात शेयर करने से ग्रेज़ा रहती हैं। सूबाई हुकूमतें और CTDs नेक्टा जैसे ढांचे तैयार कर रहे हैं। गुज़िश्ता माह CTD सिंध ने इंसदाद इंतहा पसंदी इन्फोर्समेंट सेल के नाम से एक नया सेल कायम किया था। KP हुकूमत पहले ही यह कदम उठा चुकी है। दरहकीकत पाकिस्तान को नेक्टा जैसे वफाकी इदारे की ज़रूरत है जो नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी और नेशनल एक्शन प्लान NAP पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। ताहम हुकूमत और यहाँ तक कि नेक्टा की ब्यूरोक्रेसी और वजारत दाखिला दाखिली सलामती के मामलात को इस वक्त तक संजीदगी से नहीं लेती जब तक कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से मुताल्लिक मसाइल सामने न आएं और लोग कार्रवाई का मुतालबा न करें। इस सूरत हाल में नेक्टा अचानक अहम हो जाता है, लेकिन जब नाजुक मरहला ख़त्म हो जाता है तो हुकूमत नेक्टा को भूल जाती है। अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का आखिरी इजलास 2 साल के वक्फे के बाद मुनक्किद हुआ था। इस कानूनी जिम्मेदारी के बावजूद के बोर्ड को साल की हर 6 माही में कम अज़ कम एक बार मिलना चाहिए। अहम बात यह है कि गुज़िश्ता इजलास में यह भी नोट किया गया था कि नेक्टा की तंजीम नो की ज़रूरत है और इस मकसद के लिए मुतअद्दिद तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया है। ताहम बॉडी को तब्दील करना होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की तरह एक मुतवाज़ी इदारा बनाना पाकिस्तानी तनाजुर में मुमकिन नहीं है क्योंकि इसकी वजूहात पहले बयान की गई है। पाकिस्तान को हमारे सिक्योरिटी ढांचे और उनकी पैदा करदा ज़हनियत के बारे में एक तनकीदी तहक़ीक़ात शुरू करने की ज़रूरत है। कानून नाफिज करने वाले बुनियादी ढांचे जो पाकिस्तान को वर्षे में मिले हैं और जो सालों से तैयार हुए हैं, नाकाम हो रहे हैं, बुनियादी तौर पर बढ़ती हुई पेचीदगियों और दाखिली सलामती के चैलेंजों और निज़ाम में इस्लाहात के लिए रियासत की नाअहली की वजह से। नेक्टा मुअस्सर बन सकता है अगर वो अपने बुनियादी कोऑर्डिनेशन मैंडेट पर तवज्जो मरकूज करे और अंदरूनी खतरात पर पॉलिसी बसीरत फराहम करे। अगर वो अपने मैंडेट से इनहिराफ करती है तो दूसरी एजेंसियां उसकी जगह पर कब्जा करती रहेंगी। गुज़िश्ता साल 20 निकाती NAP पर नज़रसानी की गई थी ताकि असल दस्तावेज का एक मुख्तसर 14 निकाती वर्जन बन जाए। इसके नफाज के लिए एक नया सेक्रेटरीट कायम किया गया। तंजीम को TTP और बलोच शोरिश से उभरते हुए दहशतगर्दी के खतरात का मुकाबला करने के लिए एक ठोस मंसूबा फराहम करते हुए अपनी मुताबिकत को साबित करना होगा। मज़मून निगाह सिक्योरिटी तज्ज़ियाकार है। अख़ज़ शुदा बतारीख़ 11 दिसंबर 2022। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. Like, subscribe, share and comments.